It is a pleasure to introduce Dr. Shadi Kumar, who is a very senior hematologist and professor from Mayo Clinic. Sir has done his MD medicine from All India Institute of Medicine, AIIMS, Delhi, and then from past many years, sir is in USA in Mayo Clinic, और सर इज एन एक्सपर्ट इन मल्टीपल माइलोमा, जो एक तरह का ब्लड कैंसर है। और सर एक इस बीमारी के कह सकते हैं हम दुनिया में सबसे बड़े महारथी हैं, और इस बीमारी के और इस कैंसर के इलाज के आई थिंक दुनिया में सर से बड़ा इलाज इसका डॉक्टर कोई नहीं है। और मैं मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से डॉक्टर सुमंत और मेरे साथ डॉक्टर फरहान जो हमारे हेमेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर लाल सर की तरफ से आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं, और डॉक्टर शादी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर ने समय निकाला। एंड आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें डॉक्टर शादी को अभी कुछ समय, तो यू आर ऑल वेलकम टू डू दैट। प्लीज मैम। Welcome to India and to Faridabad, Dr. Shadi. So, I would like to know, in a country where cancer almost spells death, and they say myeloma is not treatable. However, one can lead, a better life if it is detected and with somebody help of some experts. So, how is this awareness going to help the patients of India when it comes to myeloma? Yeah, I think, again, myeloma is not curable, but it's quite treatable with all the new treatments we have right now. And a lot of those newer treatments are available in India as well. And I think the key thing is, again, an early diagnosis, which is not just a problem with myeloma. I think it's a problem with a lot of cancers in the system. And I think the key thing is just making the general practitioners more aware of some of these early symptoms related to cancer, so that they can identify them, diagnose them early, and refer them at an appropriate stage, so that the patients can get treated early. Because some of the complications, especially with myeloma, in terms of damage to the kidneys or neurological problems, side effects can sometimes be quite permanent, and those trying to avoid those things from even happening is very important, especially when you're trying to make people live much longer than what we have done in the past with this disease. Early diagnosis. सर, फरीदाबाद में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि आपसे कैसे कांटेक्ट करें, क्योंकि जब इसकी बात आती है तो बहुत पैनिक कर जाते हैं फैमिली भी और पेशेंट भी। तो एक मैसेज आपकी तरफ से क्या जाएगा, और हमारे कई दर्शक हिंदी में है तो कांटेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल, कैंसर के लिए सबसे ज़रूरी है कि कोई रेफरल हॉस्पिटल में दिखाया जाए शुरू से। अगर ट्रीटमेंट भी गट पास किसी हॉस्पिटल से मिले उस डायरेक्शन, तो कोई रेफरल हॉस्पिटल से होना चाहिए। किस तरह कांटेक्ट करें, मैं डॉक्टर सुमन से पूछ लेता हूँ। आप कैसे हेल्प करेंगे, मतलब अगर आपको लोग देख रहे हो, अगर आप अभी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहें तो मैसेज देना चाहिए, आप कैसे हेल्प कर पाएंगे फरीदाबाद में आज बता रहे हैं? तो हेल्प कई तरह से कर सकते हैं। एक तो जैसे जो मैं वहाँ करता हूँ, आधा टाइम तो मैं रिसर्च में करता हूँ। काफ़ी सारे रिसर्च प्रोग्राम से जो ये कोशिश कर रहा है कि पता नया ड्रग्स डेवलप करे या और नया ट्रीटमेंट अप्रोचेस डेवलप करे। तो आई थिंक जो नॉलेज जो है और रिसर्च का जो नॉलेज है उसको डिसमिनेट करने से ज़्यादा आई थिंक फ़ायदा होता है, और कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो जाता है, या जैसे journals. Basically, I think disseminating that critical information is a key thing. Basically, the doctors, they are getting exposure to your experience and knowledge. Yeah, I mean, there's a wealth of knowledge out there, and obviously in India, a lot of patients. And the good thing is there are a lot of facilities, many cancer hospitals with all the expertise that's needed to take care of the patients. So I think the key thing is getting the patient to these hospitals in a timely fashion. I think we can all say that as myeloma treating physicians, most of us has learned from sir's papers, sir's research, and I think indirectly, not only Faridabad, all of the world has been gaining knowledge from sir's research. So directly or indirectly, every patient in the world who's being treated from myeloma is benefiting from sir's work. That's very generous. I have another question, Dr.
फिलहाल परिस्थिति प्रिविलेज के हमारे शहर में मेट्रो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट है मेट्रो का, और आज यहाँ पर आपने डॉक्टर शादी को इन्वाइट किया है, बोलते हैं तो हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेशेंट कैंसर के यहाँ पर आते हैं उनके लिए आप एक मैसेज दीजिए, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है कि इनके रिसर्च और इनके जर्नल्स के यहाँ के डॉक्टर्स को भी बेनिफिट मिलेगा जो फाइनली पेशेंट्स को मिलेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है that Dr. Shadi Kumar is here, and as Dr. Sumant Gupta has said, he is an authority in the world, and Mayo Clinic, I think it's everybody knows about Mayo Clinic, and then there is a cancer department and sub-cancer is the myeloma, and he is the head of that unit. It's a big pride for our country, and big pride for us that we are sitting with him, and we are hoping that we will keep in touch with him, and we'll try to learn many things from him, and in turn it will be passed on to the public. And we have a dynamic oncologist with us, Dr. Sumant Gupta, and with his team, and there will be a lot of room for us to progress further. And as you know, in Metro, we always like that we should be one of the best in this area, and we have doing a lot of advancement here, liver transplant, kidney transplant, and in every field, we are doing everything what any other institute in the country is doing. And now I think we are taking a chance. Maybe Dr. Shaji Kumar will like our institute and will start, having some sort of exchange program or some affiliation. That's down on the road, And so once again, I thank you all, and I thank you, for coming. I mean, it was a big surprise, I did not know that you are here, but this fellow is pretty clever, And the best to you all. Thank you so much. पेशेंट ऐसा आता है सभी सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर बुलाया सर से हम हमेशा गाइडेंस लेते रहेंगे। ठीक है, Guidance लेंगे। चलता रहेगा। कुछ भी होगा सर से गाइडेंस लेते रहेंगे, और कभी कुछ होगा तो सर के पास जाके भी गाइडेंस ले लेंगे।